Welcome student to the second class of Newton's laws of motion. In previous class we introduced you the first law of motion. Today we will study the concept of second law of motion. Good evening to everyone. So you can give the heading Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स बनाएंगे. पहला, according to this law, the time rate. लिखते चलिए, आज भी आपको काफी थ्योरेटिकल पॉइंट्स को नोट करना है. द टाइम रेट ऑफ change of momentum. Change of momentum of a body is directly proportional. Is directly proportional to the external force. Applied on it. Applied on it. And the change of momentum takes place in the direction of force. In the direction of force. So this is a very important point. Second point. If P is the momentum, B the momentum of a body, if P the momentum of a body and F be the force, दोनों वेक्टर हैं इसलिए हमने एरो लगाया. Be the external force. Don't say force, say external force. Be the external force acting on it. Then according to Newton's second law of motion, F is proportional to dp by dt. So we can write F equal to K dp by dt, where K is the constant of proportionality.
the value of K depends upon the units. Units adopted for measuring the force. ये बात हमेशा ध्यान रखना, measuring the force. तो इतना आप लिख लीजिए. So these are the theoretical notes which I am providing you. A systematic theoretical notes. There are absolute unit, gravitational units. We'll do a lot of things. So when you are done with it, तो मेरे को आप बताइए. For measuring the force. Okay. तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया, तो मैं फिर सेकंड स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है. अब देखिए, द यूनिट ऑफ फोर्स is selected in such a manner I will move to the last page. Wait a minute. Such a manner so that K is equal to 1. इस बात को आप ध्यान रखिए, K 1 होता नहीं है. हम फोर्स की यूनिट ऐसे सिलेक्ट करते हैं SI सिस्टम में, जिससे K की वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए. Okay. So I think you are done with it. So we get F equal to d dt of P. But the P can be written as mass into velocity. So substituting this value of P in the above equation. The mass of body is a constant quantity, so we will take m out of d dt. d dt means change in 1 second. So it is d dt of v. अब आपको उसको देख के याद आता होगा, dv by dt is what? Rate of change of velocity. That is called acceleration. So the force can be written as mass into acceleration.
इफ अप्लाइड फोर्स, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन respectively. Then we can write the acceleration as axi, vector format ayj, az, k, where ax is the x component, वेक्टर में हमने पढ़ा था x component of acceleration. Similarly, ay is the y component of acceleration and az will be the z component of acceleration. So please note it down. पूरे आपके नोट्स बनते जाएंगे, आप इसे लिखते जाइए। एक नया कोर्स बन रहा है, मोशन इन वन डायमेंशन। इसमें आप सभी लोगों को मैं ऐड कर लूंगा, उसमें सारी मोशन की वन डायमेंशन की क्लास होगी। नए नए बैच बनेंगे और एक दूसरा बैच बन रहा है जिसमें वेक्टर है। सब लोग ध्यान से सुनिए इस बात को, उसमें भी आपको ऐड कर देंगे। तो वेक्टर के बैच में आपको वेक्टर की वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। मोशन इन वन डायमेंशन के बैच में अलग अलग बैचेस बनेंगे, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेंगी मोशन इन वन डायमेंशन की। फिर एक बैच बनेगा प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, वो तो अभी आपको मिल ही रही है लगातार। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का भी एक बैच बनेगा, उसमें आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की सारी रिकॉर्डिंग मिलेगी। अगर आपने रैंक मास्टर ऐप डाउनलोड किया है तो मैं उसको आपको ऐड कर दूंगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी आपको रिवीजन करना हो तो अलग अलग चैप्टर्स आपको मिलेंगे। और those who are if they are interested in a good very good high level of numerical questions, तो उसमें भी प्रोविजन है। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो एक्सलरेशन को लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। उसी तरह सिमिलरली हम फोर्स को भी लिख सकते हैं, फोर्स को भी हम लिख सकते हैं। व्हाट वी कैन राइट फोर्स एज, फोर्स वेक्टर ऑफ फोर्स कैन बी रिटन एज एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, where fx can be written as m of ax, वेक्टर नोटेशन आपको मालूम होनी चाहिए, m a y, and f z can be written as m a z, m a z। अब हम आगे पढ़ेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, देखिए हम जानते हैं फिर भी हम हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स इज mlt minus 2। Next, there are two systems. There are two systems of units of force. फोर्स की यूनिट के दो सिस्टम होते हैं। पहला एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। In SI system,
The absolute unit of force is Newton. From the equation, force equal to mass into acceleration, 1 Newton equal to 1 kg into meter per second square. In CGS system, absolute unit of force is dyne, and you should somewhere write it as 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. ये आप नोट कर लीजिए. So you have written it. Okay. तो एब्सोल्यूट यूनिट की बात होगी. मुझे आपको समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट यूनिट को हम कैसे वर्कआउट करते हैं. एसआई सिस्टम में फोर्स की एब्सोल्यूट यूनिट न्यूटन होती है. स्टैंडर्ड इंटरनेशनल और सीजीएस सिस्टम में फोर्स की एब्सोल्यूट यूनिट कितनी होती है? फोर्स की एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है? आपकी डाइन होती है. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब आप सोच रहे होंगे 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन कैसे आते हैं. लेट मी टेल यू हाउ इट कम्स. देखिए, 1 डाइन इक्वल टू 1 ग्राम into centimeter per second square, and we know that 1 Newton equal to 1 kg into meter per second square. तो अब आप क्या करिए, केजी को आप बदलिए ग्राम में, 1000 ग्राम. मीटर को आप बदलिए सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर. ये तो उतना ही रहेगा सेकंड स्क्वायर. फिर 10 की नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करिए. 1 2 3 4 5, so it will become 10 to the power 5 gram into centimeter per second square. So 1 Newton is definitely equal to 10 to the power 5 dynes. So this is the basic of doing this. This way it comes, 10 to the power 5, 10 to the power 5 dynes. दूसरा आपको मैं एक नॉन कैलकुलस ट्रीटमेंट भी फोर्स के एनालिसिस का बताना चाहता हूं.
So please note it down. Okay. So you are done with it. Now you understand कि कैसे 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन्स आते हैं, कैसे 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन्स आते हैं। अब देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है फोर्स इज dp by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नाउ कंसीडर अ बॉडी, इस ट्रीटमेंट को देखिएगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, हम बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ड्यू टू दैट फोर्स द वेलोसिटी चेंजेस टू v। सो let the mass of body is m, so rate of change of momentum, तो momentum, तो हम इसको लिख सकते हैं mv minus mu, change in momentum upon time। मास को कॉमन ले लें, v minus u by t, पर आप जानते हैं v को आप लिख सकते हैं u plus at, नॉन कैलकुलस ट्रीटमेंट, u plus at minus u upon t, तो this you will get it, force equal to, u कैंसिल हो जाएगा, m at upon t, फिर t कैंसिल हो जाएगा, so we get force equal to mass into acceleration। तो इस तरह से हमें मिल जाता है हमारा फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सलरेशन। क्योंकि डीपी बाय dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, डीपी है चेंज इन मोमेंटम और dt क्या है, टाइम है, इसलिए कंफ्यूज मत होइए आप इसको। आप ये जो ट्रीटमेंट है नॉन कैलकुलस ट्रीटमेंट है, इससे भी हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं। और पिछली क्लास में मैंने बताया था फोर्स इज द कॉज, हमने डिटेल में डिस्कस किया था, which can change the state of rest or state of motion of a body। Every body cannot change its state of rest or state of uniform motion without an external force। उसी के एक्सटेंशन में अब हम न्यूटन सेकंड लॉ की एक जनरल थ्योरी पढ़ रहे हैं, which will be useful for you because you need to write in the examination। तो आपके पास लिखने के लिए काफी कुछ होना चाहिए, इसलिए हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो बोथ ऑफ द ट्रीटमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, इन एसआई सिस्टम, ग्रेविटेशनल, ये इंपॉर्टेंट बात है, यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम weight। that is written as kg weight। or also called किलोग्राम फोर्स। इस बात को सबसे पहले आप नोट करिए, केजी वेट कह सकते हैं और किलोग्राम फोर्स भी उसको कहा जाता है। इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम, the gravitational unit of force
force is gram weight, or you can call it gram force. Of definition, 1 kilogram weight is that force which generates an acceleration of 9.8 meter per second square in a mass of 1 kg. अब देखिए फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो 1 kg weight is the force, mass is 1 kg, acceleration is 9.8 kg, 1 kg. अच्छा देखिए ऐसे लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. देखिए लेट्स राइट दिस वे. मास 1 kg है और एक्सेलरेशन कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये हो गया 9.8. समझना इस बात को, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो डेफिनेटली हम 1 kg वेट को लिख सकते हैं 9.8. अब आप देखिए केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज न्यूटन. अब ये यूनिट आप याद रखिएगा, ये बहुत यूज होती है एग्जाम्स में. So how to convert the kg weight into Newton? Very simple. 9.8 Newton. इसका एक और डेफिनेशन होता है. Later on we will do it. Okay, are you done with this? ओके, तो ये आप लोगों ने इसे लिख लिया है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं. अब देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, acceleration is calculated by using this F upon m.
तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, वन फैक्टर इज फोर्स, अनदर फैक्टर इज मास। तो हम यहाँ लिखेंगे उसे मैग्नीट्यूड of acceleration, magnitude of acceleration produced by given force is inversely proportional to the mass of the body. Higher is the mass of body, mass ज्यादा हो, higher is the mass of body, lesser will be the acceleration produced. तो हम कह सकते हैं mass of body is a measure of opposition offered, ये सब लिखना बहुत जरूरी है, by the body to the change in velocity. Change in velocity. अब इसको समझिए, मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है चेंज इन वेलोसिटी। इसलिए तो हमने लिख दिया मास ऑफ ए बॉडी इज मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड बाय द बॉडी टू द चेंज इन वेलोसिटी विच द अप्लाइड फोर्स, और अच्छे से लिख लेते हैं, विच द अप्लाइड फोर्स tends to produce तो हम ये कहना चाहते हैं, you want to say that i.e. mass of a body is the measure of its inertia। पिछली क्लास में भी हमने यही बात करी थी। तो देखिए अब आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सेलरेशन क्या डिनोट करता है? एक्सेलरेशन डिनोट करता है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इनवर्सली, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो देखिए मास बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ देयर इज अ मोर मास, लेसर एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड। तो मास एक्सेलरेशन को अपोज करता है, और एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। इसलिए हमने लिखा है मास ऑफ बॉडी इज मेजर ऑफ opposition offered by the body to change in velocity which the applied force tends to produce। जो अप्लाइड फोर्स, जब भी फोर्स को अप्लाई किया जाता है तो वो बॉडी में चेंज इन वेलोसिटी को प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, और मास क्या होता है हम जानते हैं, इनर्शिया। तो हम ये कहना चाहते हैं एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। तो इनर्शिया इज ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। हर बॉडी में इनर्शिया है, मास है, जो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को हमेशा क्या करेगी? अपोज करेगी।
तो आप इसको नोट करिए, सब चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सपोज योर आस्क्ड क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन, हाउ यू राइट, so make your notes. अब देखिए, इफ यू हैव रिटन इट, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक और पॉइंट, 2 पॉइंट और हमें लिखने, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। एन एक्सलरेटेड मोशन, जब हम बात करते हैं एक्सलरेटेड मोशन, मतलब वो मोशन जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है। द एक्सलरेटेड मोशन ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज ड्यू टू अ फोर्स, ड्यू टू अ फोर्स which can occur in two ways. First, due to change in speed. Only. In this case, तो बॉडी का एक्सलरेटेड मोशन, जब हम बात करते हैं एक्सलरेटेड मोशन, उसका मतलब है द स्पीड, और आई वांट टू से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। जब वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती है बॉडी की, दो तरह से चेंज हो सकती है, या तो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। तो हम कहते हैं इट इज अ केस ऑफ एक्सलरेटेड मोशन ड्यू टू चेंज इन स्पीड ओनली। इन दिस केस, force must be wait a minute, must act on the body along the direction of motion, along the direction of motion। क्लास के बाद इन सबको पढ़िएगा आप, you will enjoy। और opposite to the direction of motion। These are your notes। तो एक्सलरेटेड मोशन कब होता है? जब स्पीड का मैग्नीट्यूड, अब ऐसा हो सकता है कि डायरेक्शन, देखिए वेलोसिटी इज ए वेक्टर, उसमें मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बदल जाएगी तो एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल देंगे तो भी एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन को हम दो तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला, या तो हम बॉडी के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, तो मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ऐसे केसेस में फोर्स या तो अलोंग द वेलोसिटी अप्लाई किया जाता है या अपोजिट टू द वेलोसिटी। अगर फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर फोर्स अपोजिट टू द वेलोसिटी अप्लाई किया जाता है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इन दीज टू केसेस magnitude of velocity will change, magnitude of velocity will change, that means velocity change takes place, velocity change takes place means accelerated motion। अब velocity can be changed in another way, जो हमने सर्कुलर मोशन में देखा है। वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन
two factors, magnitude and direction. If the direction of velocity will change, then we say that vector of velocity changes. तो यही second point हम लिख रहे हैं, due to change in direction only. Due to, अभी बहुत important point है, change in direction only. Due to change in direction only. In this case, force, ध्यान रखिए, force must act perpendicular to the direction of motion. Of the body. तो ये बात यहाँ बिल्कुल क्लियर है। अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलना चाहते हैं तो फोर्स को वेलोसिटी के 90 डिग्री पर अप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए। एक फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ हमने दोनों बातें कर ली, एक्सेलरेशन और जो बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं लॉज ऑफ मोशन के, वो बहुत सिंपल होते हैं। तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला इसमें यूज करना पड़ता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। So please note it down. ये दो बातें आपको याद रखनी चाहिए। ओके, तो यू आर डन विद इट। आपने इसे लिख लिया, तो आगे बढ़ते। देखिए, अब कुछ दो तीन छोटे छोटे हम लोग न्यूमेरिकल्स करते। द मास ऑफ a truck, simple one, is 7,000 kg. It starts from rest and rolls down a hill with constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Calculate its acceleration and the force acting on it. तो बहुत सिंपल है, इसको हम कर सकते हैं। मास ऑफ ट्रक गिवन है। अब देखिए, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को हम यूज करेंगे। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है?
400 meter. It starts from rest. It starts from rest. एक मिनट इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख दे. It starts from rest. इसका मतलब क्या है? उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है. टाइम गिवन है 20 सेकेंड. 0 into 20. एक्सेलरेशन नहीं मालूम, निकालना है 20 का स्क्वायर. सो 400 इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 400 इक्वल टू, अब स्क्वायर करेंगे हम 20 का 400 a बाय 2. ये कैंसिल हो गया, तो ट्रक का एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ फोर्स. आप जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल यूज ऑफ इक्वेशन. मास है 7000 kg, एक्सेलरेशन है 2, तो फोर्स आ गया 14,000 न्यूटन. देखिए कितना सिंपल एप्लीकेशन है, एनीबॉडी कैन डू इट. तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन करते हैं. अब नाउ वी हैव अ फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. राइट फ्रॉम बेसिक डिटेल्स आई एम वर्किंग ऑन द चैप्टर. अब इसको हम किसी भी तरीके से बहुत हैवी लाइनअप नहीं दे रहे हैं. ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. क्वेश्चन नंबर 2. A constant retarding force of 50 N means Newton is applied to a body of mass 20 kg moving with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड. रिटार्डिंग फोर्स है, तो रिटार्डिंग फोर्स का मतलब यह हो गया कि वो बॉडी की वेलोसिटी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा. हाउ लॉन्ग? टाइम पूछ रहे हैं. डस द बॉडी टेक टू स्टॉप. इसे पढ़ लीजिए. तो ये रिटार्डिंग फोर्स है. तो बॉडी कितने टाइम के बाद, आफ्टर व्हाट टाइम द बॉडी विल कम टू रेस्ट, ये पूछा जा रहा है. तो हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो ए कैन बी रिटन एज F अपॉन m. Force is given 50, mass is given 20, so 5 by 2 meter per second square is the retardation. Now using v equal to u plus at, बॉडी रुक रही है तो फाइनल वेलोसिटी 0 है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 15,
रिटार्डेशन है इसलिए हमने यहाँ माइनस साइन लिया, 5/2t, तो ये इधर आ जाएगा, ट्रांसफर करिए लेफ्ट में, इक्वल टू 15, नाउ कैंसल, so the time will be 6 seconds. A very simple type of question which we are doing it. So this we calculate it. Okay. रिटार्डिंग फोर्स है, वेलोसिटी कम हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा साइन लिया है, माइनस साइन लिया है। वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई ना, या प्लस, दो प्लस को ऐड करने पे कभी 0 आता है, ये आप लिख लो, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है इसलिए हमने कौन सा साइन लिया, माइनस। आप खुश, अब क्लियर हो गया आपको? अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तीसरा क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन कर रहे हैं सिंपल सिंपल, तो फिर हम इम्पल्स पढ़ेंगे। देखिए इट इज वेरी सिंपल, यू आर नाउ, देखिए अब हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक और इक्वेशन अब आ गया हमारे पास, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वही है जो हम पहले कर रहे थे, कोई खास बड़ी बात नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, a constant force acting on a body of mass 3 kg changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. In 25 seconds. The direction of motion. The direction of motion of the body remains unchanged. What is the magnitude and direction of the force? तो डायरेक्शन तो पहले ही बता देते कि फोर्स विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि आप देखिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सबसे पहले देखिए मास कितना है, 3 kg। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है,
3.5 मीटर पर सेकंड, या आप इसे बोल सकते हैं 7/2 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है? 25 सेकंड। तो देखिए, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। 7/2 इक्वल टू 2। एक्सलरेशन निकाल लेते हैं, टाइम दिया हुआ है 25 सेकेंड। सो 7/2 माइनस 2 इक्वल टू 25a। 3/2 equal to 25a. So acceleration will be 3/50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सलरेशन आ गया तो भाई फोर्स तो आ ही जाएगा। मास इनटू एक्सलरेशन, मास कितना दिया हुआ है? 3 kg। 3/50, so the force is 9/50 Newton. This way we have calculated this. तो what I want to tell you, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत इजी है। तो फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, बोलिए, 2as। अब एक और इक्वेशन है न्यूटन के सेकंड लॉ से, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। और यहाँ पे हमसे पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है। तो यार देखो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो बिल्कुल क्लियर है। आप देखिए, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। पहले वेलोसिटी थी 2, फिर हो गई 2 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 3.5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, फोर्स वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। व्हेन फोर्स इंक्रीजेस द वेलोसिटी, व्हेन फोर्स इंक्रीजेस द वेलोसिटी, व्हेन फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो फोर्स मस्ट एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसको नोट कर लीजिए। तो इनिशियली क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थ्योरेटिकल है, अभी बाद में डेरिवेशंस वगैरह आएंगे, तभी थोड़ा जोरदार हो जाएगा, फ्रिक्शन वगैरह। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, एंजॉय इट। हैव यू नोटेड डाउन? आपने इसे नोट कर लिया? ओके। तो फोर्स मस्ट एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फोर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगना चाहिए। बहुत सिंपल है, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपके नोट्स बन जाए, जिससे आपको एग्जाम्स में आसानी हो। और मैं दूसरी कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट क्या हो, बिल्कुल क्लैरिटी, कंसेप्ट में क्लैरिटी हो। एंड आई वांट दैट यू शुड डेवलप इंटरेस्ट इन स्टडीइंग द चैप्टर। तो फिर मिलते हैं, टेक केयर। तो इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा आपने, इसको रिवाइज करिए।